Hi guys, thank you so much for watching my channel, The Witty Turtle, and today I'm gonna discuss the question number 26 from the chapter Process Costing. So one of you requested in the comment section that I should solve process C account from this chapter, from this question. So the question says a product passes through three processes A, B and C. 10,000 units at a cost of rupees 1.1 were issued to process A. So 10,000 units are being put into the first process, that is process A, whose cost is rupees 1.1 per piece per unit. The other direct expenses were as follows. Sundry materials, direct labor, direct expenses. These three expenses are given to you for process A, B and C. Okay. The wastage of process A was 5% and in process B is 4%. So how many units are being put into the first process, that is process A? 10,000 units. So the wastage will be 10,000 into 5%. So that will be how many units? 500 units, right? So next the question is saying the wastage of process A was sold at rupees 0.25 per unit. Okay. जो 500 units wastage आ रहा था process A में, that is being sold at a rate of 0.25 rupees. And the wastage of process B is being sold at a rate of 0.5 per unit. And for C, it is rupees 1. नेक्स्ट बोल रहा है द ओवरहेड चार्जेस वर 160% ऑफ डायरेक्ट लेबर. Whatever is the amount of direct labor, your overheads will be 160% of that. The final product was sold at rupees 10 per unit, fetching a profit of 20% on sales. Okay, so here we can say one thing, that if the selling price is 10 rupees per unit and there is a profit of 20%, matlab there is a profit of 2 rupees per unit. What is 20% of rupees 10? 2 rupees per unit. So the total cost per unit will be 8 rupees. 10 minus 2, selling price minus profit equals to cost. So 8 rupees per unit will be your cost. कौन से केस में? In the process 3. So you have to find out the percentage of wastage in process C. So as you can see, while studying this chapter, I have marked here only C, process C account. That means process A and B, these are normal process accounts, just the way we make it. And here I have also written a note. Here, as the units to be transferred to next process is not given, we have to go without abnormal gain or loss. So this means as it is not given, as we don't have the units that those are to be transferred to next process. We don't have that. So we have to go without abnormal loss or abnormal gain. We will not be able to calculate abnormal loss or gain. हम लोग यही मान के चलेंगे that only normal loss has happened. No abnormal gain or no abnormal loss has occurred. Okay. So coming to the first process account, that is process A. This is very easy. Material is already given to you. 10,000 units at a rate of rupees 1.1. Okay. 11,000. Additional material given to you in the question. Material, direct labor, direct expenses and overheads account. Do not forget to write direct overheads also, because here it is given, it is being given as a percentage of direct labor. So your direct labor is how much? 4,500. इसका 160%, that is 7,200. So आपको total मिल गया यहाँ पर. Now you also know the you also know the amount of normal loss. How much is that? 5% of the total input. So 10,000 का 5%, that will be 500 units, and when it will be multiplied with 0.25 per unit, then it will amount to, what will be the scrap value of this normal loss? Rupees 125. Now you can easily calculate the balancing figure, that is transfer to process B account. Okay,
transfer to process B account. Coming to process B. The first thing will be what? Transfer from process A account. You already know the figures. After that, direct material, labor, expense and overhead, these are given to you in the question. Now, normal loss का भी आपको percentage दिया हुआ है. Here it is given that in process B, the wastage will be 4%. So, input is how much? 9,500. इसका 4% will be how much? 380 units and it will be sold at a price of 0.5 per unit. So, you can calculate the scrap value of these normal losses, right? Now, you can easily calculate the balancing figure, that is your amount transferred to process C account. Coming to the most integral part of this question, that is how to prepare process C account. So the first thing will be what? This entry will be passed there. C. Transfer from process B account is how much? 9120 units and the amount is also known to you. Material account, labor, expenses and overheads, these are also being given to you. Now what do you need to calculate? You need to find out these two amounts, right? So ये तो आपका balancing figure आएगा. But what do you need to calculate now? You need to identify, you need to calculate what is the amount of normal loss here. So as you can see, अगर यहाँ पे the total number of units is 9120, then यहाँ पर भी वही होना चाहिए because you have to balance these two. These two should be equal. Similarly, the amounts should also be equal, right? Now, tell me, in the question, I have told you that as it is given to you that selling price is 10, profit is 20 on the final product. So, process C में हम लोग final product ही निकाल रहे हैं. So, यहाँ पर ये वाला चीज़ applicable होगा. Selling price is 10, profit is 2, so your cost will be how much? Your cost will be 8 rupees per unit. So in the first working note, it has been shown to you that cost per unit will be 8 rupees in the final product. Okay. In the second note, we have to calculate the number of units of normal loss. है ना? Number of units of normal loss. So as you can see in the second working note, let the number of units of loss in process X be process C be X. So ये X हम लोग किसको ले रहे हैं? We are taking this value as X. Okay, we have to calculate this. And in the question itself, it is given to you that process C में जितना भी normal loss होगा, that will be sold at a rate of ₹1 per unit. So if this is X, then this amount will also be X, right? So as you can see, we can write it as, okay, so now tell me one thing, if this is 9120 and this is X, then what will be this amount? This minus X, right? This minus X. So let's write this 9120 minus X. ये अमाउंट 9120 माइनस एक्स है. ओके, नाउ टेल मी वन थिंग, ये जितना भी है इसका कॉस्ट कितना रहेगा? इसका कॉस्ट रहेगा, अगर 8 रुपए पर यूनिट है तो ये जो अमाउंट है कॉस्ट, ये कितना आ जाएगा? इंटू 8. ओके, इंटू 8. सो दिस अमाउंट इज अगेन, दिस अमाउंट विल बी इक्वल टू व्हाट? ये टोटल जितना है, दिस माइनस दिस विल बी दिस मच, 68088 minus x will be how much? This much. नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, मैं आपको फिर से समझाती हूँ. पहले हम लोग ये कंसिडर करते हैं, पहले हम लोग ये देखते हैं कि हमने जो यहाँ पर कॉस्ट निकाला है ये क्या है? एक यूनिट का कॉस्ट है, एक यूनिट का कॉस्ट है, ठीक है. तो यहाँ पर अगर प्रोसेस सी में से टोटल एक्स अमाउंट ऑफ एक्स नहीं, टोटल ए अमाउंट ऑफ यूनिट्स प्रोसेस सी से फाइनली निकल रहे हैं, तो उनका जो कॉस्ट होगा कितना होगा? उनका कॉस्ट हो जाएगा 8 रुपीज पर यूनिट. तो उनका टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा? 8x या फिर 8a, ए माना था हम लोगों ने, तो 8a आ जाएगा.
समझ में आया? अभी देखो यहाँ पर, अभी आप ये जो अमाउंट वाला कॉलम है ना, इसको भूल जाओ आप, ठीक है? आप बस ये दो चीज देखो यहाँ पर क्या है, इस साइड में कितने यूनिट्स हैं टोटल, 9120, एंड दोनों साइड्स के जो यूनिट्स हैं दे शुड बी इक्वल। तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि ये जो नॉर्मल लॉस का यूनिट्स है दैट इज x नंबर ऑफ यूनिट्स, x यूनिट्स, ठीक है? तो अगर ये x यूनिट्स होंगे तो यहाँ पर ये अमाउंट क्या हो जाएगा, 9120 माइनस x इक्वल्स टू दिस। ये है आपका यूनिट्स, ये है रुपीस, ये है यूनिट्स, ये है रुपीस। ओके, सो इफ दिस इज x तो ये वाला अमाउंट क्या हो जाएगा, दिस माइनस x। तो यही तो हमने लिखा है यहाँ पर, दिस माइनस x। और इसका कॉस्ट जो है, इसका कॉस्ट हम कहाँ लिखते हैं, यहाँ पर इसका कॉस्ट मेंशन किया जाता है। तो इसका कॉस्ट कितना होगा, नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू कॉस्ट पर यूनिट, दैट इज 8 रुपए, दैट इज 8 रुपीज। सो ओके, सो ये क्या हो जाएगा, 9120 माइनस एक्स इंटू 8, ठीक है, इंटू 8। सो ये हो गया हम लोग का यहाँ का कॉस्ट। अब इसी कॉस्ट को हम और क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो इस साइड का जितना भी टोटल आपका खर्चा है, जितना भी अमाउंट प्रोसेस में गया है, वो कितना है टोटल, इट सम्स अप टू बी टोटल 68,088 रुपीज, 68,088 रुपीज। अभी देखो नॉर्मल लॉस जितना आपका हुआ है, अगर x नंबर ऑफ यूनिट्स हुआ है तो उसका स्क्रैप वैल्यू कितना है, 1 रुपीज पर यूनिट, 1 रुपी पर यूनिट। सो जितना यूनिट्स खर्चा हुआ, जितना यूनिट्स लॉस हुआ है, अगर 1 रुपए में उसको हम बेचेंगे, सो योर टोटल स्क्रैप वैल्यू विल बी x ओनली, राइट? सो ये टोटल अगर आपका 68,088 हो रहा है, तो इस साइड में ये क्या हो जाएगा, ये भी तो आपका 68,088 है, ये भी तो आपका 68,088 है, ठीक है? ये दोनों बैलेंस हो रहे हैं। तो यहाँ पर अगर ये x है और इसका जो स्क्रैप वैल्यू है दैट इज ऑल्सो x, क्योंकि दिस इज 1 रुपी पर यूनिट। सो दिस वैल्यू विल बी व्हाट, अभी आप यूनिट वाले कॉलम को भूल जाओ, दिस वैल्यू विल बी व्हाट, 68,088 माइनस एक्स, 68,088 माइनस एक्स। ये वैल्यू आप कैसे निकालोगे यहाँ से, इसका टोटल जितना हुआ उससे आप ये वाला माइनस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा। सो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी वैल्यू को ही हम दो अलग अलग स्टेटमेंट बना के उन दोनों को इक्वेट कर रहे हैं। अभी आपके पास एक सुंदर सा इक्वेशन बन के आ जाएगा। क्या आ जाएगा इक्वेशन, दिस इंटू 8, 9120 इंटू 8, 72,960 माइनस 8x। ये जो x यहाँ पर माइनस हुआ है इसको हम इस साइड में ले आएंगे, ये हो जाएगा प्लस x इक्वल्स टू 68,088। तो अब क्या हो जाएगा, ये 72,960 माइनस 68,088, ये हो जाएगा आपका 4872 इक्वल्स टू, ये आपका -7 हो जाएगा, इसको हम यहाँ भेज देंगे तो दिस विल बी 7x। सो x विल बी हाउ मच, 4872 बाई 7, 696 यूनिट्स। तो x हमने क्या मान लिया था, नंबर ऑफ यूनिट्स लॉस, नंबर ऑफ कितने नंबर ऑफ यूनिट्स लॉस हुए हैं। अगर 696 यूनिट्स लॉस हुए हैं तो उनका जो देयर स्क्रैप वैल्यू विल ऑल्सो बी 696, एज scrap value of 1 unit is 1 rupee, so in total it will be 696 rupees. So now you can easily calculate this amount, right? You can easily calculate this amount, 68088 minus 696. So you will get this amount. I hope your question is now clear. Okay. So finally question में हमें ये पूछा है what is the percentage of normal wastage in process C. So what was your input?
how much was your input? 9120 units, and your normal loss is 696 units. So this will be what? 696 by 9120 into 100, and this will be 7.63%, right? 7.63%. So I hope your doubt has been cleared, and if you like this video, please hit the like button, share with your friends, your CMA intermediate friends, and subscribe to my channel, The Witty Turtle. And if you have not joined my Telegram group, then the link is given in the description box below. Please go and check out, or otherwise you can simply type The Witty Turtle on your Telegram and can find my group.